Dear students, in the previous video we have discussed about the structure of the nephron. The structure of nephron that consists of two parts, as we said that the nephrons will be the major functional units of the kidneys. Each nephron consists of the Malpighian body and the tubule part. The Malpighian body was the part in which the cup-shaped glomerulus, cup-shaped Bowman's capsule, and within it was the glomerulus. So the things are discussed over here again, that the first point is basic filtration unit in the kidneys is the nephron. So in the kidneys, the basic structure which performs the function of filtration is known as the nephron. Each nephron consists of two parts. The first part of the nephron is the Malpighian body and the second part is the renal tubule. The Malpighian body, what is this Malpighian body? The Malpighian body consists of the cup-shaped structure which is called the Bowman's capsule, which if you remember in the yesterday's diagram we have already discussed that the cup-like structure is called the Bowman's capsule, and there was a network of capillaries within it which is known as glomerulus. The glomerulus is a network of capillaries, but it begins from what? It begins from a branch of renal artery. So renal artery, it is going to divide itself into multiple capillaries, and this network of capillaries is known as the glomerulus. The glomerulus is the structure which is going to perform the filtration of the blood. Now when the blood passes through the glomerulus, there will be certain water and water soluble substances that will be entering into the Bowman's capsule. मतलब जो चीजें ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो सकती है उन सब चीजों को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेट कहते हैं. फिल्ट्रेट में कोई भी लार्ज साइज प्रोटीन्स नहीं होते और फिल्ट्रेट में कोई भी ब्लड सेल्स नहीं होते. तो फिल्ट्रेट में होता क्या है? द फिल्ट्रेट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. फिल्ट्रेट में होता है मेनली क्या होता है? वाटर होता है, और वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स. ये सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें किस में होंगी? फिल्ट्रेट में होंगी. और ये जो फिल्ट्रेट है अब वो फ्रॉम द बाउमेन्स कैप्सूल, मतलब ल्यूमेन ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल से नीचे आएगा इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. तो ये तीनों जो है वो ट्यूब्यूलर पार्ट्स है, रेनल ट्यूब्यूल के पार्ट्स है. प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल मतलब जो बाउमेन्स कैप्सूल से सबसे ज्यादा पास में था, फिर वो यू शेप स्ट्रक्चर था उसे कहते हैं हम लूप ऑफ हेनली, और फिर एक जो स्ट्रक्चर थोड़ा दूर था ट्यूबुलर पार्ट उसे हम कहते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल. हर एक जो रीजन है उसका खुद का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, एंड इट इज एबल टू रीअब्सॉर्ब सर्टेन सब्सटेंसेस एंड नॉट एबल टू रीअब्सॉर्ब सर्टेन अदर सब्सटेंसेस. तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कि ग्लूकोज, तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को रिलीज नहीं करती यूरिन में, मतलब all the glucose is going to be reabsorbed in the renal tubules. मतलब ग्लूकोज तो सारा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा कहाँ पे? प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में. अब ये रीअब्सॉर्ब हुई हुई चीजें कहाँ जाती है? तो हमने स्टूडेंट्स याद हो तो डायग्राम में देखा था कि ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स और ये जो ट्यूबुलर पार्ट्स थे उनके आसपास क्या था? एक कैपिलरी रन हो रही थी. तो जो चीजें एब्जॉर्ब होंगी वो एंटर किस में होंगी? कैपिलरी में. और कैपिलरी में फ्लो क्या हो रहा है? ब्लड हो रहा है फ्लो. तो ये सारी चीजें रीअब्सॉर्ब होके किस में वापस एंटर हो जाती है? ब्लड में. इवन फिल्ट्रेट रन्स डाउन इन द रेनल ट्यूब्यूल. सो द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज गोइंग टू बी रीअब्सॉर्ब. अब वाटर भी बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है फिल्ट्रेट में. ये सारा वाटर हम यूरिन में रिलीज नहीं करते. हम यूरिन में तो हार्डली 1.5 to 2 लीटर्स ही यूरिन एलिमिनेट करते हैं. तो बाकी का जो वाटर है वो वापस क्या हो जाता है? रीअब्सॉर्ब होता है. कितना वाटर रीअब्सॉर्ब होगा वो किस पे डिपेंड करता है? कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी कितना वाटर है. अगर ज्यादा वाटर है तो रीअब्सॉर्प्शन कम होगा, अगर कम वाटर है तो रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा होगा. वैसे मैकेनिज्म से वाटर जो है वो भी रीअब्सॉर्ब होता है. अब सब चीजें रीअब्सॉर्ब हो जाने के बाद जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल रहा, जैसे कि यूरिया है, ठीक है, फिर एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स है और वाटर है, ये सारी चीजें जो है वो किडनी में से एंटर किस में होती है? इनटू द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं यूरेटा.
और ये जो यूरेटर्स होते हैं ये ओपन होते हैं किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है और ये ब्लैडर क्या करता है, यूरिन को स्टोर करता है। ये यूरिन को तब तक स्टोर करता है जब तक इसे एलिमिनेट करने का टाइम ना आ जाए। तो मस्कुलर स्ट्रक्चर जो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है और आफ्टर विच फ्रॉम द यूरेथ्रा द यूरिन विल बी रिलीज। तो यूरिनरी ब्लैडर लीड्स टू यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रा रिमूव्स द यूरिन आउटसाइड। तो ये तो बात हो गई एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। Now we are going to discuss about the excretion in plants. Now just like animals, plants do not have any specialized excretory organs. There are no specialized excretory structures by which the plants can eliminate their waste. मतलब ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स प्लांट्स में नहीं है, स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है जिससे वो एक्सक्रीशन कर सके। तो प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता होगा, और सबसे पहले तो ये कि प्लांट्स में एक्सक्रीटरी वेस्ट होता क्या है। जैसे कि एनिमल्स में हमने कहा कि देयर इज मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, फिर नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड। तो ये जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं एनिमल्स में। प्लांट्स में वेस्ट क्या होता है, तो सबसे पहले प्लांट्स में होते हैं गैसेस O2 और CO2। हमें पता है कि प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 को कंज्यूम करते हैं और O2 रिलीज करते हैं। तो O2 जो है वो उस टाइम पे वेस्ट प्रोडक्ट होता है। सेम वे जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करते हैं तो O2 कंज्यूम करते हैं और CO2 एलिमिनेट करते हैं। मतलब at time intervals O2 and CO2 both need to be removed out of the body of the plant. तो पहला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या आ जाता है, गैसेस O2 and CO2। दूसरा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है एक्सेस ऑफ वाटर। प्लांट्स में भी क्या है कि रूट्स जो हैं दे आर कॉन्स्टेंटली एम्बेडेड इन द सॉइल। मतलब वो जो एब्जॉर्प्शन का जो फंक्शन है दैट विल कीप ऑन अंडरगोइंग ऑल द टाइम, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द वाटर विच प्लांट्स एब्जॉर्ब दे रिमूव इट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो एक्सेस ऑफ वाटर एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब सेल की जो एक्टिविटीज की जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी क्या होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स कैन एलिमिनेट देयर वेस्ट इन वेरियस वेज। प्लांट्स को वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए कई सारे तरीके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेस ऑफ वाटर। तो वाटर अगर एक्सेस में होता है तो प्लांट्स उसे कैसे रिमूव करते हैं। अब एक्सेस ऑफ वाटर विल बी रिमूव्ड थ्रू द स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। मतलब जब डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होता है तब अलोंग विद द गैसेस और एक चीज जो एलिमिनेट हो जाती है वो है एक्सेस ऑफ वाटर एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपीरेशन। वही स्टोमेटा में से गैसेस भी रिमूव हो सकते हैं, मतलब O2 और CO2 का रिमूवल भी किससे होता है, थ्रू द स्टोमेटा। Plants also store certain waste products in the older leaves, which then fall off from the plant. मतलब कई प्लांट्स में आपने देखा होगा कि दो तरह के लीव्स होते हैं, ग्रीन भी होते हैं और फिर नीचे जो होते हैं वो थोड़े येलोइश लीव्स भी हो जाते हैं। तो ये जो येलोइश लीव्स होते हैं उसमें प्लांट्स क्या करते हैं कि ये जो ओल्डर लीव्स हैं उनमें जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो एक्यूमुलेट कर देते हैं और आफ्टर सम टाइम दैट येलो लीफ इज गोइंग टू फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट। मतलब अल्टीमेटली all that content is going to enter into the soil। मतलब ऐसे लीव्स जिससे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं। Plants can store their waste even in the large sized vacuoles। प्लांट्स दूसरी एक चीज भी कर सकते हैं कि प्लांट्स जो सेल होता है, प्लांट सेल में सबसे बीच में सेंट्रल क्या होता है, वैक्यूल। और वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गेनल है जो वेस्ट को एक्यूमुलेट करने के लिए ही बना गया है। तो वैक्यूल में भी प्लांट्स अपना वेस्ट एकोमोडेट कर देते हैं, एक्यूमुलेट कर देते हैं। सम प्लांट्स स्टोर द मेटाबॉलिक वेस्ट इन द डेड टिश्यूज। प्लांट्स जो होते हैं जैसे जैसे उनका ग्रोथ होता है वैसे उसमें डेड टिश्यूज का अमाउंट भी बढ़ता जाता है, जैसे कि डेड जाइलम वेसल्स। तो जाइलम वेसल्स जो डेड होते हैं उनमें प्लांट्स अपना जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको डिपॉजिट कर देते हैं, जैसे कि रेजिन्स एंड गम। They are being discarded, they are being stored in the xylem vessels of the plants. Some of the waste can be directly removed into the soil. तो कई ऐसा भी वेस्ट होते हैं जो डायरेक्टली वो सॉइल में रिमूव कर देते हैं।
मतलब प्लांट्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन ना होने पर भी ऐसे कई सारे मेथड्स हैं बाय विच द प्लांट्स कैन एलिमिनेट देयर वेस्ट. So students, we have hereby completed our chapter number 6, that is life processes. Human excretory system. In human beings, excretory system consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, and urethra. The nitrogenous end product in man is urea. Kidney is a bean-shaped, red-colored organ. Kidneys are attached to the dorsal body wall on either side of vertebral column in the abdominal cavity. Each kidney of an adult human measures 10 to 12 centimeter in length, 5 to 7 centimeter in width, 2 to 3 centimeters in thickness, with an average weight of 120 to 170 grams. Its outer margin is convex and inner margin is concave. The notch present on the inner margin is concave. The notch present on the inner margin is called hilus. Renal artery, which brings blood to the kidney from heart, enters the kidney through hilus. Renal vein, which carries blood from the kidney to the heart, and ureter come out of the kidney through hilus. Each ureter is a thin-walled tube. The anterior end of ureter is wide and is called renal pelvis. The ureter opens into urinary bladder. Urine is stored in the bladder till it is filled and then is sent out through a canal called urethra. On top of each kidney, an adrenal gland is present. It is endocrine gland and has nothing to do with excretion. Longitudinal section of kidney. Outer region of kidney is deep red in color and is called as cortex. The inner region is light red in color and is called as medulla. In the medulla are 9 to 12 inverted pyramid-like structures with a broad base towards the cortex and narrow end towards the pelvis. These extend into pelvis. The broad end of each pyramid is branched and gives the appearance of sepals of a flower. Hence, these are called calyces. Through calyces, urine reaches funnel like ducts, and from these into pelvis. From pelvis, urine enters ureters. The cortex extends in between the medullary pyramids as renal columns called columns of Bertini. Each kidney consists of several thousands of nephrons, which are the basic structural and functional units. They are responsible for urine formation. In human kidney, there are about 2 lakh of nephrons. Each nephron has 2 parts. 1. Cup-like structure called Bowman's capsule, and 2. Tubular portion, figure 19.3. Bowman's capsule is a 2-layered cup with space in between the 2 layers. Inside the cup of Bowman's capsule, there is a network of large number of capillaries, which is called glomerulus. Glomerulus, along with Bowman's capsule, is called Malpighian body or renal capsule. After entering the kidney, the renal artery divides into a number of arterioles in the kidney.
Each renal arterially enters a Bowman's capsule as afferent arterially, forms a capillary network inside the cup-like structure, and leaves the Bowman's capsule as afferent arterially. The tubular part of nephron has three parts. A. Proximal convoluted tubule. B. Distal convoluted tubule. C. Distal convoluted tubule of nephrons opens into collecting tubule. A. Proximal convoluted tubule. The tubule continues further to form a highly network called proximal convoluted tubule. A hairpin-shaped Henle's loop is the next part of the tubule, which has descending and ascending limb. B. Distal convoluted tubule. The ascending limb continues as another highly coiled tubular region called distal convoluted tubule. C. Collecting duct. The distal collecting tubule of many nephrons open into straight tube called collecting duct, many of which converge and open into renal pelvis through medullary pyramids in the calyx. The Malpighian corpuscle, proximal collecting tubule, and distal collecting tubule of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla. In majority of nephrons, the loop of Henle is too short and extends only very little into the medulla. Such nephrons are called cortical nephrons. In some of the nephrons, the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. These nephrons are called as juxtamedullary nephrons. The efferent arterially emerging from glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called peritubular capillaries. A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta. Vasa recta is absent or highly reduced in cortical nephrons.